everyone. Today in chapter 3 matrices we are going to study about elementary transformation. Let us understand what actually the elementary transformation rules are and how it is used for finding the inverse of the matrices. We are having here 6 operations known as transformation in case of matrix elementary. Okay, the very first one is Ri interchange Rj. That means your any ith row can be interchanged to the jth row, or ith and jth row can be interchanged. Similarly, your ith and jth column can be interchanged. Your third rule says that your any row can be multiplied by a non-zero scalar k, and similarly your any column can be multiplied by a non-zero scalar k. Our fifth rule says that we can add any row to its corresponding elements of another row by multiplying non-zero k. Similarly, any column can be added to any corresponding column, elements of any corresponding column by multiplying it a non-zero k. All these rules, your 3 rules are based upon rows and 3 are based upon your column, and altogether there are 6 operations which are used for finding the inverse, when it is said in the question that you have to find by elementary transformation. So here I am going to work out the inverse by elementary row transformation. Either you will apply the row property or you will apply the column transformation. Before we go for finding the inverse, you should know that inverse if exists, then only it can be worked out. Then how will we come to know that inverse exists or not? While applying these properties or these rules, if in matrices you find any particular row or any particular column, the whole terms are 0, that means inverse does not exist. Let us understand this here. How the rule for finding the inverse by elementary row transformation is, your A is written as I to A. Understand the meaning of this I to, that means identity matrix of order 2. Your A is here 1, 3, 2, 7, and your identity matrix is 1, 0, 0, 1, and here it is A. Now what you have to do is, you have to bring this identity matrix left hand side, and corresponding whatever value you get on the right hand side will be the inverse of the given matrix. The working rules are, first of all we make this term, that is A1, 1, 1. You can see here it is 1. So our first priority is to make this term 1 if it is not 1 by dividing it whatever element or whatever numerical value it is present here. Here since it is already 1, so we will move to the next procedure, that is after you have made 1, you have to come to the element of A21 and you have to make it 0. So we are moving in this way, you can understand. First of all we are focusing on A11, then A21, then A22, and then A12. Our first thing is to make it 1, which is already 1. Next we will move to make it this term as 0. The rule behind this, how you will make 0 is, you know here it is 2. If you multiply 2 with this 1 and subtract it, you will get 0. So how you are going to do? Where is the 2? 2 is in the second row. तो आपको जो प्रॉपर्टी लगाना है वो है R2 -2, और ये 2 आपका किसमें इंटू हो रहा है? R1. आपको किसमें इंटू हो रहा है? R1. एक एक एलिमेंट लेके हम लोग समझते हैं, इसका मतलब क्या नहीं चेंज होगा? R1 चेंज नहीं होगा. तो सबसे पहले आप लिख लीजिए जो आपका चेंज नहीं होगा. 1, 3, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी हमें दोनों तरफ अप्लाई करनी है. 1, 0, एंड हियर इट विल बी A. सबसे पहले हम इस एलिमेंट को देखते हैं, ये किस पोजीशन पे है? 2, 1. दैट मीन्स A21 is equal to A21 minus 2. इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे क्या है? A11. ओके,
देखिए 2 1 की वैल्यू कितनी है 2, सो 2 माइनस 2, a1 की वैल्यू कितनी है 1 1, तो ये आपको कितना दे रहा है यहाँ पे 0, तो आपने यहाँ पे 0 लिख लिया। इसी तरीके से ये किस पोजीशन पे है डबल 2, सो a22 इज इक्वल टू a22 माइनस 2, इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा है a12, तो ये आपका a22 हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 3 एंड दैट इज इक्वल टू 1, ये आपका कितना हो गया 1। इसी तरीके से आप यहाँ पे आइए 0 माइनस 2 हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ये आपका माइनस 2 हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 0 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। अब आप देखिए आपको 1 मिल गया, 0 मिल गया एंड luckily we got again 1 which was our requirement, that was A2। ये फर्स्ट हमने अप्लाई किया, यहाँ पे सेकेंड और फिर थर्ड हमने चेक किया। कहीं पे भी 0 लाने के लिए हमें ये चेक करना है कि 1 होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट 1 हेल्प अस टू गिव द 0। नाउ दिस 1 विल हेल्प यू टू गिव द 0 हियर। नाउ अब हमें 0 कहाँ चाहिए R1 में चाहिए, तो अब हम प्रॉपर्टी में क्या लगाएंगे R1 इज इक्वल टू R1 माइनस 3, किस रो में हम इनटू कर रहे हैं सेकेंड रो में, ठीक है। तो अब देखिए जो आपका चेंज नहीं हो रहा है पहले उसको लिख दीजिए, आपका 0 1 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, यहाँ पे भी जो नहीं चेंज हो रहा है वो R2 का दैट इज माइनस 2, 1 नहीं चेंज होगा और ये A आपका एज इट इज रहेगा। फिर से देखिए हम लोग यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी करते हैं। अब आइए 1, ये आपका कहाँ पे है A11 is equal to A11 minus 3A21, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है। तो ये आप देखिए A11 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 0, 3 इंटू 0 करेंगे तो आपको तो ये कितना आ गया 1, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया 1। यहाँ पे जब आप आएंगे तो ये आपका हो जाएगा A12 is equal to A12 minus 3A22 and no doubt this is equal to 3 minus 3 into 1 and that is equal to 0 और ये आपका 0। तो आपने देखा आपको लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई है। इसी तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका कितना है 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 3 अगेन माइनस 2, 1 minus 3 into 2, this will give you 7, so you got here 7, 0 minus 3 into 1, तो ये आपको क्या मिल गया minus 3, so this term is your minus 3। now you see A आपकी ये मैट्रिक्स है, इसके साथ इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, दैट मीन्स दिस गिवन मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ द what is given in the question, and therefore you can write that A inverse is equal to 7 minus 2 3 1। whenever you find your inverse you can get it checked, here it is minus 3, you can get it checked, okay। how to get it checked, let us see that you can get it checked by multiplying both a given matrix and seeing whether you are getting this identity matrix or not। let us see here how can it be work out। just see, we are having A as A inverse, A is your 1 3 2 7 and here it is 7 minus 3 minus 2 1। when you multiply, just see what you are getting, you are multiplying this row with this column, 1 into 7 and minus 6, okay, minus 3 plus 3, 2 7s are 14 minus 14, 2 3s are minus 6, here it will be this is actually 1, so 2 into minus this yeah, it is 2 into minus 3 and this is it's 7, here it is 7 and this is minus 6 plus 7, so what you are going to get here 1 0 0 1 and therefore whatever inverse you have worked out is correct। thank you।